everyone, here me Fatma. Before starting our lecture, kindly subscribe my channel. Today we discuss about important MCQs regarding FPSC, NTS, MDCAT pass-based papers. Solved MCQs. The first MCQs is biotin is required for the activity of pyruvate carboxylase. What is biotin? Biotin is a water-soluble vitamin. In mammals, the biotin-dependent enzyme and the metabolic process they participate. In pyruvate carboxylase in gluconeogenesis, जो बायोटिन रिक्वायर्ड होता है वो पायरोवेट कार्बोक्सिलेज के लिए रिक्वायर्ड होता है. सेकेंड एमसीक्यूज म्यूटेशन मीन चेंजेस इन द ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स peroximose could lead to dash Zilver syndrome, epidermolysis bullosa, Gaucher disease, Leber's neuropathy. The correct answer is Zilberger's syndrome. Zilberger's syndrome is a genetic disorder passed from parents to children newborn periods, like muscle tone hypotonia. Third, the cofactor required for lipoprotein lipase activity is apocoenzyme 2. The correct answer is apocoenzyme 2. Fourth MCQs, inactive precursor of enzyme are known as, correct answer is proenzyme. Is the most important MCQs regarding your paper. कौन सा inactive precursor of enzyme है जिसको हम कहते हैं वो है proenzyme. Iron is present in all of the following except pyruvate kinase. 6. Enzyme stored in muscle is called SGOT, alkaline phosphatase, SGBT या CPK. The correct answer is CPK. CPK is abbreviated as keratin phosphokinase. CPK is an enzyme found in your heart, brain and skeletal muscles. When muscle tissue damage, CPK releases into your blood. Lactase dehydrogenase is isoenzymes, anti-enzymes, coenzyme, zymogen. The correct answer is isozymes. Next, an example of lysases is cholinesterase, fumarase, glutamine synthetase, amylase. The correct answer is fumarase. An enzyme that makes a double-strand DNA copy from a single-strand RNA template molecule is known as reverse transcriptase. 10th, the enzymes that catalyze the same reaction but differ in physical properties are called the isoenzymes. In myocardial infarction, the first enzymes to rise, CPK. In previous slide, we discussed about CPK. CPK is the creatine phosphokinase. Important short question and also as well as MCQs. 13. Enzymes involved in degradation of ephedrine. Ephedrine is a catechol transferase. 14. Muscle glycogen cannot contribute directly to blood glucose level because muscle lacks glucose 6-phosphatase. मसल क्यों नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली टू द ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकॉज मसल्स जो हैं वो लैक कर रहे हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज को. 15. द मेन साइट ऑफ फ्लोराइड inhibition in the Amidan-Markov pathway of acid is enolase. Enzyme help by lowering the activation energy. Important MCQs repeated. Enzymes किस में हेल्प कर रहे हैं लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी को. नेक्स्ट एमसीक्यूज, द एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज अफेक्टेड बाय बायोटिन डेफिशिएंसी. डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसकीटोलेज, ऑक्सीडेज, कार्बोक्सिलेज. द करेक्ट आंसर इज कार्बोक्सिलेज. द डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन कैन बी आइडेंटिफाइड मेजरिंग द रेड सेल ट्रांसकीटोलेज. competitive enzyme inhibition will cause increase of Km and increase of Vmx, decrease of Km and increase of Vmx, decrease of Km and decrease of Vmax, increase of Km and unchanged of Vmax. In my previous lecture, I discussed in detail Km and Vmax.
Which of the following is correct of the pyruvate dehydrogenase enzyme complex? Required TPP as cofactor. कौन सा पायरुवेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम कम्प्लेक्स जो हमें रिक्वायर होता है करेक्ट फॉर्म में? TPP. TPP मीन थायामीन पायरोफॉस्फेट. Active form of thiamine is now known to be essential cofactor. Next, dehydrogenase used as coenzyme all of the following except FAD, FMN, NADP, ferroporotoporphine. The correct answer is ferroporotoporphine. Benzene test is positive with the enzyme. Benzene test. बेंजीन भी हम इसको कह रहे हैं क्योंकि हम बेंजीन से इसको कह रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पर ऑक्सीडेज होगा. बेंजीन टेस्ट जो है वो बेंजीडीन टेस्ट जो है वो हम लोग डिटेक्शन करते हैं ब्लड के लिए, ठीक है, इन दी फीसिस सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन हम इसमें कौन सा यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइज एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड. नेक्स्ट, की ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोज, pyruvate kinase, hexokinase, glucose 1 dysphosphatase. The correct answer is key galactolase enzyme is the phosphofructose. Multi-enzyme complex in human is fatty acid synthase. Which of the following is not a characteristic feature of allosteric enzyme? Allosteric enzymes के कौन सा करेक्टर नहीं है, फीचर नहीं है? Follow Michaelis-Menten kinetics. Next MCQ's example of preventive antioxidant is a catalase. LDH has following number of isoenzymes. Most important short question आपसे पूछ लिया जाता है कि LDH क्या है? LDH lactase dehydrogenase है. lactate LACTAT lactate dehydrogenase. अब इसमें 5 हमारे पास होते हैं इंक्लूडिंग हार्ट, रेड ब्लड सेल्स, liver, kidney, brain, lung and skeletal muscles. Heart and muscle human LDH is a quaternary protein formed of the combination of two subunits. Two subunits हमारे पास बना होता है, कौन कौन से हैं? muscle and heart. In your right side there is a box. What is LDH a marker for? In medicine, LDH is often used as a marker of tissue breakdown as LDH is abundant in red blood cells and can function as a marker for hemolysis. Next, the enzyme phosphofructose kinase 1 is strongly activated by fructose 2 bisphosphatase. आपने इसमें fructose 2 bisphosphatase इसका आंसर होगा, इसका fructose bisphosphatase नहीं, fructose 2 6-phosphatase. Next, magnesium is needed for the activity of which enzyme? ATPase. When the prosthetic group of enzyme is an inorganic, it is called a cofactor. Important long question में हमारे से पूछ लिया जाता है कि कोफैक्टर के आगे आप इसको डिस्क्राइब करें, एंड इम्पॉर्टेंट आल्सो शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQs. नेक्स्ट, कोएंजाइम इज एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज यूजली फंक्शन टू एक्सेप्ट वन ऑफ द क्लीवेज प्रोडक्ट. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी इन अ मैन इज ग्लूकोज 6-phosphate dehydrogenase. Enzyme concerned with the citric acid cycle are found in mitochondria. Serum alkaline phosphatase level increase in hyperparathyroidism. Next, the enzyme that split hydrogen peroxide into water and oxygen is the catalase. Important MCQs, the enzyme जो स्प्लिट कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में, H2O को और O2 को किस में कैटेलाइज कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, वो कैटेलाइज में कर रहा है. Enzyme that catalyze the transfer of molecule from one molecule to another is transferase. The activity of this plasma enzyme is responsible virtually for all plasma cholesterol esters in human. LCAT, abbreviated as lecithin cholesterol acyl transferase. Lecithin cholesterol acyl transferase. Next, enzymes are classified according to action on substrate. Fraction of CPK. CPK is an enzyme that is elevated in a myocardial infarct is MB fraction. Next, a material that speeds up a chemical reaction without chemically becoming involved is a catalyst.
Km of an enzyme is a substrate concentration at half maximal velocity. My dear ones, Km and Vmax is important as well as in short question आपसे पूछ लिया जाता है कि Km और Vmax में क्या डिफरेंस है, और as well as in MCQs. Next, acetyl coenzyme A act as a substrate for all the enzyme except malic enzyme. Next, enzyme that is specifically increased in obstructive jaundice. jaundice में जो है वो कौन सा है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज. एलिवेटेड लेवल, जब लेवल इंक्रीज हो रहा है ऑफ सीरम ग्लूटामिक ऑक्सीलेटिक एसिड का ट्रांसमिनेज इन इंडक्टिव ऑफ लीवर डिजीज. किस में हो रहा है? लीवर डिजीज में. ग्लूटामिक ऑक्सोलिक एसिटिक ट्रांसमिनेज. Muscle glycogen which cannot contribute to blood glucose due to the absence of which enzymes? Glucose 6 phosphatase. Michaelis-Menten hypothesis. Important MCQs. Michaelis-Menten का hypothesis क्या था? कि वो ये था कि enzyme जो है वो substrate complex है. Formation is essential in enzymatic reaction. Coenzyme responsible for single carbon transferase is biotin. Acetyl coenzyme THF4. THF4 is the correct answer. कौन सा एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अ सिंगल कार्बन ट्रांसफरेज का? वो है THF4. तो क्यों इतना ज़्यादा मैंने फोकस किया? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि बहुत रिपीटेड MCQs है कि हमसे पूछ लिया जाता है कि कोई एंजाइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल कार्बन ट्रांसफर इज THF4. हेक्सोकाइनेज इज अ ट्रांसफेरेज. एंजाइम प्लस कोई एंजाइम कॉन्स्टिट्यूट hollow enzyme. The combination of main supporting enzyme is called hollow enzyme. Which of the following is a membrane bound enzyme that catalyzes the formation of cyclic amino monophosphate from ATP adeno triphosphate? Adeno monophosphate से adeno triphosphate में हमारे पास कौन सा आ रहा है? adenylase cyclase. The cofactor usually act as a bridge between enzyme and substrate. Important short question as well as MCQs. An enzyme has its specificity due to its structure. Next, the particular order in which several enzymes work together is classified in the metabolic pathway. कौन सा pathway में? Metabolic pathway. The example of organic cofactor is heme and felvin. Riboflavin नहीं है, heme and felvin. The physiologist who used the term enzyme for the first time is the John Oscar Helveting, Wilhelm Coney या Ernest John Wilhelm Coney. One of the earliest symptoms of vitamin A deficiency is the nyctalopia. My dear students, nyctalopia is a blind not seeing night blindness. इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमें हो जाती है, जो कि मतलब कि रात के टाइम हमें नज़र नहीं आ रहा था सही. इस तरीके से उसको हम डिजीज़ को क्या कह रहे हैं, उस सिम्टम्स को क्या कह रहे हैं? निक्टोलोपिया. नेक्स्ट, द ऑप्टिमम pH ऑफ एंजाइम पेप्सिन इज 2. pH ऑफ एंजाइम कितनी है? 2. इफ़ यू एड मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड इट हैज़ नो अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज सैचुरेशन. Which molecule bind to the active site of an enzyme? Competitive inhibitor. A temperature beyond optimum can affect the shape of enzyme. A temperature beyond optimum can affect the shape of an enzyme. Which metabolic process in bacteria is directly inhibited by the antibiotic penicillin? Synthesis of chemical components of the cell wall. मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज MCQs कि कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बैक्टीरिया में हो रहा है जो कि इनहिबिट कर रहा है बाय द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को? वो कौन सा है? केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल. हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट. कैसे एक एंजाइम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ जाता है, उसका रिएक्शन कैसे बढ़ जाता है? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट से. An allosteric site of an enzyme is often involved in feedback inhibition. Nucleic acid which also serve as an enzymes are ribosome, not ribozyme, ribosome.
The activity of almost every enzyme in a cell is regulated by feedback control. The correct answer is feedback control. Next, the non-protein part of an enzyme is prothetic group. Most important repeated MCQ कि कौन सा enzyme जो है वो non-protein part है, तो वो prosthetic group जो है वो non-protein part of an enzyme है. The protein part of hollow enzyme is apoenzyme. Magnesium is an inorganic activator for the enzyme phosphatase. A little change in pH. pH means power of hydrogen. To change is ionization of the active site. Next, a three-dimensional cavity bearing a specific change is the active site. Three-dimensional जो cavity जो change कर रही होगी specific change को उसको active site कहेंगे. My dear, these are the pH values regarding your enzymes chapter. Optimum pH of arginase is 9.70. pH of chymotrypsin 7 to 8 उसकी pH होगी. pH of introkinase 5.5 and pH for pancreatic lipase is 9. Dear ones, this is the whole story of the enzymes and important MCQs regarding your PPSC, MDCAT, NTS, FCPS and one paper. I hope so you can understand. Any question, any you may ask in this section box. Thank you so much. Don't forget to subscribe my channel.